continuing the same concept to solve one more important question, Laplace transform using the convolution theorem. So question will come like this. Okay, sir. Solve y double dash plus 3y dash plus 2y is equals to e to the power of minus t, comma, y of 0 is equal to 0 and y dash of 0 is equal to minus 1 using Convolution. this. Meanwhile, somewhere we are using the convolution theorem. मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और जहाँ पे भी आपको इसकी जरूरत है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम उसको यूज करना है. So now look at how the solution will be and how to solve it. Okay, sir. Solution. What is given here? Given y double dash plus 3y dash plus 2y is equals to e to the power of minus t. Taking Laplace transform on both sides. Taking Laplace transform on both sides. Yes, sir. Taking Laplace transform on both sides. So while taking Laplace of y double dash plus 3 is a constant, obviously we can take out Laplace of y dash plus 2 into Laplace of y is equal to Because e Laplace to of the power. minus t. Yes. ये एक क्वेश्चन नहीं है. देखिए ये एक क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं, लैप्लास के इनवर्स ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम को भी यूज कर रहे हैं. नाउ एस स्क्वायर Yes. लैप्लास ऑफ y डबल डैश का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. क्या है वो फार्मूला देखिए, एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ वाई माइनस एस इंटू वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0. ये पूरा किसके लिए है? ये डबल डैश के लिए. ये इसका फार्मूला है, Okay. एल ऑफ वाई डबल डैश का फार्मूला है. ओके. Okay. प्लस 3 इज ए कांस्टेंट, वी कैन राइट डाउन 3 एज इट इज. अब एल ऑफ वाई के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ. देखिए जो अलग कलर यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो फार्मूला है स्पेसिफिक Yes, sir. फार्मूला, एस इंटू एल ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ 0. बस इतना ही है. क्लोज इट. एक्चुअली दिस इज फॉर एल ऑफ वाई. ठीक है. Yes. बाकी का काम आपको अब नॉर्मल काम करना है. प्लस 2 इंटू एल Plus ऑफ वाई L of y इज इक्वल टू is equals to e पावर माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई एस प्लस 1. 1 by s plus 1. ठीक है ना. Yes. अब देखिए कुछ कंडीशंस है इसके अंदर. व्हाट्स द कंडीशन? Y of 0 is equal to 0. इज इक्वल टू 0 कॉमा Y dash of 0 is equals to minus 1. दैट वी हैव टू यूज इट. Okay. इसके अंदर यूज करना है y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 0 की वैल्यू को यूज करें. तो एस स्क्वायर S square एल ऑफ L into 0. ये तो 0 हो गया. ये y डैश ऑफ 0 Yes. माइनस है, Minus माइनस 1 इंटू माइनस plus 1. प्लस 1 प्लस 3s Plus 3. into L of y. Okay. Again y of 0 will become 0, so no need to write. Plus 2 into L of y. ठीक है.
is is equals equals to to 1 by s s plus, plus 1. ठीक है. Now look at from here, here and here. Can we take L of y common? Yes, sir. So now take it. L of y common we have to take. L of S y common if you take right, x square plus plus 3s 3s plus 2 plus 1. 1 को उधर भिजा देंगे. Okay, sir. L of L y of y is is equal equals to to 1 by 1 by s plus 1 minus 1. -1. थोड़े लोग यहाँ पर एलसीएम लेके मिस्टेक कर ले रहे, क्वेश्चन को गलत हो जाता है यहाँ से. इफ यू टेक द एलसीएम हियर, डोंट टेक द एलसीएम. एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं? s Okay. प्लस 1 इंटू s प्लस 2. चेक कर लीजिए आप. एस S स्क्वायर plus फैक्टर्स आई एम टेकिंग दैट 1 बाई yes L s प्लस 1 into y. -1. ये मल्टीपल टर्म्स डिनोमिनेटर में भिजा देंगे. सो देन L of y वैल्यू बिकम्स 1 बाई, ये पहले से s प्लस 1 है, ये भी S इधर आ plus गया. 1 s प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है whole square. इंटू Yes, s into प्लस 2. s plus 2 minus 1. -1 के साथ भी डिवाइड होता ना जी पूरी वैल्यू. ये मल्टीपल टर्म Okay. दोनों को डिवाइड होगा. s S प्लस plus 1 1 into s plus 2. s प्लस 2. देन फाइनली y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू L will go that side, becomes Laplace inverse of 1 by s plus S 1 whole square into s into plus s 2. plus ये ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 Laplace plus inverse inverse of of 1 by 1 s plus 1 into s plus 2. ये क्वेश्चन में क्या यूज करो बोल रहा है ना? कॉन्वोल्यूशन को यूज करो बोल रहा है ना. देखिए यूजिंग yes कॉन्वोल्यूशन, तो ये जो है इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर ये जो जो डिफरेंट डिफरेंट लैप्लास इनवर्स है उसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करके उसकी वैल्यू को लाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट yes कॉन्वोल्यूशन से, ये वाला पार्ट भी कॉन्वोल्यूशन से सॉल्व करके उसके आंसर्स को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है. तो अपन अब ये क्वेश्चन जो है एक डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता. अगर इसको अलग सॉल्व करें तो एक अलग क्वेश्चन होता. यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवॉल्वेड, ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता. यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवॉल्वेड, ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता. तो मतलब अपन एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी अपन 3 क्वेश्चन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है. अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ. एस प्लस 1 होल स्क्वायर एस प्लस 2 की वैल्यू लाप्लास इनवर्स से सॉल्व कर रहा हूँ. देखिए ठीक है. तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी एक अलग कलर से लिख देता हूँ यहाँ के. इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ से अलग क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में. समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? yes sir. ये क्वेश्चन का पार्ट ही है, बट एग्जाम में अगर इसको अलग से पूछ लिया खाली इतना ही तो कैसा करना Direct solve. है, कॉन्वोल्यूशन से कैसा करना. लेट अस सी. In this one we have to take, there are two parts. First part will be yesterday what we have done, same thing I am doing. One part will be taken as f bar of s, that is 1 by s plus 1 का होल स्क्वायर एक पार्ट ले लेना है, और कॉमा g bar of s is equals to 1 by s plus 2. Now applying Laplace inverse on both sides. Laplace inverse of f bar of s is equals to Laplace inverse of 1 by s plus 1 whole square. S plus 2 whole square. This is equals to Laplace inverse of f bar of s की वैल्यू f of t according to the convolution theorem is equal to, यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 को अगर आप बाहर निकाल दिए तो ये हो जाता e पावर माइनस टी. दैट इज इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ Laplace inverse transform. 1 by s square left of here. This is equal to
e पावर माइनस टी, ये डायरेक्ट फार्मूला है अपने पास, लैप्लस इनवर्स ऑफ 1/s² इज टी ओनली, दिस इज एफ ऑफ टी। इसी में से अगर आपको एफ ऑफ यू की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं अपन, यू की पावर माइनस यू, आ गया एफ ऑफ यू। सिमिलरली लैप्लस इनवर्स ऑफ, यहां से कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ तो भी आपको, लैप्लस इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू, मंसूर 8 o'clock को क्लास बोलते 8:15 को आए, ऐसा नहीं होता हमारे पास। मंसूर आई एम टॉकिंग टू यू। सर वो लिंक अभी देखा था सर, लिंक लिंक नया नया जूम ऐप डाउनलोड करके आधे से ज्यादा जस्ट नो क्वेश्चन ऐप। डन, this much we have already done. यस This is your question number 17 I am solving. ओके Okay, later on you can see the recording, you can understand little question. ओके Again, it is e power plus 2 will become here e power minus 2t. Laplace inverse of 1 by s plus 2 का आंसर e power minus 2t. Laplace, sorry, we required g of t minus u for the convolution. So it is becomes e power minus 2 into t minus u. After getting this f of u value, g of t minus u value, we should write here by, therefore, by convolution, Theorem. theorem, by convolution theorem, Laplace inverse of f bar of s into g bar of s is equal to integral 0 to t. Yesterday we have done already. f of u, एग्जाम में कभी कभी आपको, एक्सटर्नल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, स्टेट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम भी आ सकता है, मतलब खाली स्टेटमेंट। Okay. लैप्लस इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पर है और जी बार ऑफ एस की है, दोनों को अगर मिला के लिख दिए तो टुगेदर बिकम्स एस प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एस प्लस 2, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, एफ ऑफ यू की वैल्यू यहाँ पर है u इंटू ई पावर Minus C. माइनस यू, जी ऑफ टी माइनस यू की वैल्यू है ई पावर माइनस 2t, Minus 2. T मल्टीप्लाई minus. माइनस इंटू माइनस प्लस 2u, मतलब इसको ई पावर 2u सेपरेट भी लिख सकते हो, इंटू डी यू। नाउ लुक एट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू u, मतलब ये वाला जो टर्म है इसमें u नहीं है तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, e पावर माइनस 2t आउटसाइड, 0 to t, this is u as it is, we can merge these two, e पावर माइनस u, e पावर 2u, ये दोनों वैल्यूज को मर्ज कर सकते हैं हम। e Yes. पावर 2u में से e पावर माइनस u सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचता, e E पावर power U. माइनस u, सॉरी नॉट u, इट्स अ प्लस u ना, Yes. Yes, sir. du। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करना है, अदरवाइज अपने पास एक फेमस फार्मूला है इसके लिए, कौन सा, ये वाला। एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मर्ज नहीं करना है, ठीक है। सो द फार्मूला विल बी हियर, आई विल राइट, दिस इज द फार्मूला, इंटीग्रेशन t e पावर t dt फार्मूला इज t minus 1 e पावर t minus 1 e पावर t प्लस c। अब आ रहे बच्चे क्लास में 8 o'clock बोले तो 8:20 को आ रहे हैं, और तो कैसा होता क्लास समझ में नहीं आता, e पावर माइनस 2t इंटू, As it is फिर डायरेक्ट आंसर U minus 1. इंटू e E पावर into U लिमिट्स आर 0 to plus t, C. प्लस c लिखते हैं जी, वहाँ पे Yes. लिमिट्स है ना, Yes, yes. Sorry, sir. e पावर माइनस 2t
इंटू अपर लिमिट, जहां भी यू है वहां टी लगाना है, टी Yes. माइनस वन T minus into EU. ई पावर ET. टी, ये अपर लिमिट Yes. है, माइनस लोअर लिमिट में जहां भी यू है वहां 0 जीरो, minus बट वी नो e दैट ई power पावर 0. जीरो वैल्यू इज वन, ई पावर E जीरो वैल्यू ma- इज वन, सो टी माइनस वन इंटू ई पावर टी, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, plus 1. बस इतना ही। और एक दो स्टेप अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, मतलब ये टी से ई पावर टी का मल्टीप्लाई और ये माइनस से ई पावर टी का मल्टीप्लाई, बाद में ओवरऑल ये वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी रहने दीजिए। एक पार्ट का सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये पार्ट का वैल्यू आ गया है, इसको भी कॉन्वोल्यूशन से करना है, वो नेक्स्ट पेज में करना है, नेक्स्ट पेज। बाद में मैं पूरे वैल्यूज को लाके इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, खत्म, प्रॉब्लम खत्म। नेक्स्ट, we are assuming this is a separate question, maybe it is possible, 1 by s plus 1 into s plus 2, that part also we have to solve using कॉन्वोल्यूशन। एग्जाम में बोल रहा, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपके बोल रहा है कि इसको कॉन्वोल्यूशन से ही करिए, तो कॉन्वोल्यूशन से ही कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट दूसरी बार कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं सेम क्वेश्चन में, एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू 1 by s plus 1 कॉमा जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू 1 by s plus 2। now taking Laplace inverse of f bar of s is equals to Laplace inverse of 1 by s plus 1, that is equal to, according to the statement of the convolution, it is f of t, this is e power minus t, and we required f of u actually, which is equal to e power minus u। second part को simplify करेंगे, Laplace inverse of G bar of S. g bar of s is equals to 1 by S plus 2. Laplace inverse of 1 by Yes, s, Laplace inverse. that is equal to, this is g of t according to the statement of convolution theorem, it is e power minus 2t, and we required g of t minus u actually, which is equals to e to the power minus 2 into t minus u। now we write again by convolution, Theorem. एक ही क्वेश्चन को देखो अपन एप्लीकेशन भी यूज करें, फिर दो बार कॉन्वोल्यूशन से कर रहे हैं। अब मैं जो टॉपिक आपको करा रहा हूँ वो है कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कंपलसरी क्वेश्चन है, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, convolution theorem, again we are repeating, why? Because this question will come in exam definitely। Laplace inverse of, जिसके ऊपर ज्यादा 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 फोकस करे वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t f of u c of t minus u du। so this is Laplace inverse of, what is this value, 1 by S plus 1. s plus 1 into 1 by s plus 2 S together I plus am writing, this is integral 0 to t, Laplace. f of u की वैल्यू है e पावर माइनस u, g of t की वैल्यू है e पावर माइनस 2t, एक हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस e पावर 2u एक हो गया, दो टर्म्स है इसके अंदर। सो नाउ e पावर माइनस 2t इज ए कांस्टेंट टेक आउट,
दिस इज 0 to t, we merge these two, e power 2u में से e power u सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e power u du E is, power this is e power minus 2t into integration of e power u is e power u only, limits 0 to t. This is upper limit minus lower limit, e power minus 2t into upper limit is e power t, lower limit is e power 0 is 1. इसको और सिंप्लीफाई करना है तो करो. Bases are equal, powers to be added, e power minus t minus e power minus 2t. ये इसका लैप्लास इनवर्स का वैल्यू होगा. फाइनली ये पूरे वैल्यूज को लाके यहाँ पे रखना है इसके अंदर इधर. तो एक काम करता हूँ मैं, इसको एक अलग कलर से बता देता हूँ. सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो y इज इक्वल टू, इसका आंसर दिस वन, e पावर माइनस 2t, e पावर माइनस 2t इंटू t माइनस 1 e पावर t प्लस 1, ये इसका आंसर, माइनस इसका आंसर e पावर माइनस e पावर t माइनस e पावर माइनस 2t, माइनस इंटू माइनस प्लस e पावर माइनस 2t. दैट्स योर फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. ये वैल्यू आप कहाँ से कैसा करके लाते हैं? सिर्फ कन्वोल्यूशन से लाते हैं. ये जो पार्ट है ना, ये अंदर वाला पार्ट, इसको अपन इधर सॉल्व करे देखो सेकंड पेज में, और उसके बाद वाला पार्ट ये थर्ड पेज में सॉल्व करें. मतलब मैं अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहा हूँ, ये दो पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है, वो खाली इतना पार्ट भी एग्जाम में पूछ सकता, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इवॉल्वेट बोल के पूछ सकता. अंडरस्टूड? ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का डिस्कशन आज खत्म हो गया. ओके, फिर नेक्स्ट क्लास तो इंस्टीट्यूट वालों को तो ऑफलाइन में रख रहा हूँ मैं. ऑनलाइन में अगर क्लास हुई तो एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म कराना है. ठीक है, अब इसका मैं रिकॉर्डिंग और पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ. आप लोग एक बार देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए.